Hello students, our today's topic is copy delete depreciation areas. Depreciation areas are copied with the chart of depreciation. You can also define your own depreciation areas in the chart of depreciation. Each depreciation area represents a specific type of a valuation. For example, book depreciation or tax depreciation. There is no leading depreciation area. All depreciation areas are equal. The depreciation areas are defined with a two-digit numeric key, which represents depreciation terms that you can enter in the asset master record or in the asset classes. The assignment of the ledger occurs through accounting principles. This option does not exist in classic asset accounting. So for each accounting principle, a correspondence depreciation area is required. Before we do this step, we have to assign accounting principle to ledger groups for parallel accounting if we have not done this already. You can use both the ledger approach and account approach with the new finance accounting, assets accounting. All ledgers in which the company code updates account balances in the general ledger must also be updated in the asset accounting. This means that every base or standard ledger has to be controlled as a depreciation area. So no depreciation areas post periodically but post immediately to GL. For each valuation, there is always just one depreciation area that posts to the general ledger in real time and manage APC. For that, we can go by path SPRO, SAP Reference Implementation Guide, Financial Accounting, Assets Accounting, Organizational Structures, Copy Reference Chart of Depreciation और Depreciation Areas. SAP में जाके हम चेक करते हैं. Copy reference chart of depreciation areas. Double click on copy delete depreciation areas, enter our chart of depreciation and then click on continue. तो देखो यहाँ पर हमारे ऑलरेडी डेप्रिसिएशन एरियाज डिफाइन है. अब हमें यहाँ पर हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल असाइन करना है. तो सबसे पहले हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल हमने, अगर आपको याद होगा तो गैप और गैप बनाया था. तो यहाँ पर हमें डिफाइन करना है गैप फॉर लीडिंग लेजर. अगर आपको याद होगा तो हमने लीडिंग लेजर, अपेंडिक्स लेजर बनाए थे. तो हम न्यू सेशन में जाके चेक करते हैं. FINSC _ लेजर, FINSC _ लेजर. क्लिक ऑन कंटिन्यू बटन. तो देखो यहाँ पर हमारा TR नॉन लीडिंग एंड T2 अपेंडिक्स लेजर. So double click on TR or we can check here. Okay, select it and click on company code settings. Now click on continue button. Okay, we will remove this. Now click on. तो देखो यहाँ पर हमारा UK गैप के लिए GA GP है और ये है. Just save it. So come back to our depreciation area page and double
वी विल सी नाउ हियर, डबल क्लिक ऑन इट। तो देखो यहाँ पर हमारी ऑलरेडी सेटिंग की हुई है। वैल्यू मेंटेनेंस, पोस्टिंग इन द जनरल लेजर, come back, सो हम यहाँ पे अकाउंटिंग प्रिंसिपल असाइन करते हैं जो हमने जनरेट किया था। हमने बनाया था GAGB। जस्ट प्रेस एंटर एंड हम लोग सिलेक्ट करेंगे एरिया पोस्ट इन रियल टाइम, जिसकी वजह से हमें 2 लेजर मिलेंगे एसेट पोस्टिंग करने के लिए। नाउ कम बैक and for again consolidated balance sheet in group currency we have to select GAGB and rest of GAP, GAP, again press enter. Now click on save button. Just click on continue button. Now click on create request, enter your description. Then click on continue button.